In today's lecture, we will see the elements of information theory. So, what is that? That is, a machine learning problem can also be analyzed in terms of information transfer or exchange. So, we can see here कि information learning we can analyze as the information transfer or exchange. So we can use the machine learning for transfer and information transfer and for information exchange. Okay, now our data set is composed of n features which are considered independent, drawn from n different statistical distribution. Now what is the meaning of n different statistical distribution? We can consider different types of data set from which we are retrieving n different features. Okay, and from n different data sources, for example from DBMS, from Excel file, from RDBMS, there are certain other, that is from Python database. So these are various different statistical distribution or databases from which we are extracting the features and we are creating the data set for machine learning. So that's why our data set is composed of n features which are considered independent, drawn from n different statistical distributions. Okay, now therefore there are n probability density function pi of x which must approximate through other n qi of x functions. As there are n different features we are extracting, so that's why there are n different probability density function we can use to approximate other n qi function. Okay, now in any machine learning task it's very important to understand how two corresponding distribution diverge and what is the amount of information we lose when approximating the original data set. What we have to do in machine learning task, it is very important to understand that how many amount of information that two different data sources get diverge. Different data sources means how many two different data sets contain how many information which is to be diverged while approximating to the original data set. मीन्स कितनी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी व्हेन वी अप्रोक्सीमेट डिफरेंट डेटा सोर्सेज इनटू द वन, उसमें कितने डेटा डाइवर्स हो गए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड while learning the machine learning task. Okay, now how to calculate that approximation or a divergence, that using the entropy. So using the entropy we are calculating the divergence of information which is retrieved from different data sources. Okay, so the most useful measure is called the entropy, which is denoted by the expression as h of x is equals to minus of x belongs to capital X, that is the particular feature belongs to the original data set capital X, such that probability of that getting that particular features into the data set into the log of 2 p of x. This value is proportional to the uncertainty of x and its measure in bits. For many purposes, a high entropy is preferable because it means that the certain features contains more information. Maximum time high entropy is preferable because which contains the data with more number of features. For example, in tossing a coin, getting the possible outcomes as head and tail, right, means एक ही होगा कोई तो भी, right, that is one bit. But if the number of outcomes grows even with the same probabilities, h of x also does because of higher number of different values and therefore increased variability. मीन्स अगर हम लोग एक ही कॉइन टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन बिट, एक तो हेड होगा या फिर टेल होगा. लेकिन अगर नंबर दो ही आउटकम आ रहे हैं यहाँ पे, नाउ इफ़ द number of outcome grows,
तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इवन तो क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी, सेम रहेगी, दैट इज़ एच ऑफ एक्स के तरह 1 बिट ही रहेगी. सो इसीलिए हायर नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ एंड देयर फॉर इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी. अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग कंसिडर करते तो इट विल इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑल्सो. सो इट्स पॉसिबल टू प्रूव दैट फॉर अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग द नेचुरल एल्गोरिथम्स, एंड द फॉर्मूला यूज्ड फॉर दैट इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस ln 2 pi sigma square. Okay, now so the entropy is proportional to the variance, right, which is a measure of amount of information carried by a single feature. What is the variance? That is the amount of information carried by a particular single feature. So the low variance, so the low variance implies low information level, and a model could often discard all those features. If we have a target probability distribution, that is P of x, which is approximated by another distribution Q of x, a useful measure is a cross entropy between that P and Q. अगर हमारे पास टारगेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें दूसरे कोई डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट करना है, तो दैट कैन बी मेजर बाय यूजिंग द क्रॉस एंट्रोपी, दैट इज एच ऑफ पी कॉमा क्यू is equals to minus of x belongs to x, p of x log 2 of q of x. In order to understand how a machine learning approach is performing, it's also useful to introduce a conditional entropy. अगर हमें मशीन लर्निंग अप्रोच हाउ इट परफॉर्म्स ये अंडरस्टैंड करना है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू इंट्रोड्यूस अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और द अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स गिवन बाय द नॉलेज ऑफ वाई. क्योंकि हमें क्या करना है, अगर मशीन लर्निंग अप्रोच हमें अगर अंडरस्टैंड करना है तो ऑल टाइप ऑफ कंडीशंस वी हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, कि कौन से कंडीशंस उसमें आ सकते हैं, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट कंडीशंस यूजिंग द कंडीशनल एंट्रोपी और द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी कैन से, राइट. सो व्हाट इज़ दैट? सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं हम लोग? अनसर्टेनिटी मीन्स इफ द इवेंट इज ऑकर्ड वेन एवर ऑलरेडी वन इवेंट हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड. न्यू इवेंट हैज़ occurrence of new event when particular event is already occurred, right. So we are having the knowledge y, and from that knowledge y we have to identify the knowledge of x. So that's why it is given as h of x by y. Conditional probability formula we are applying over here. So what is the conditional probability formula? That is probability of getting that x comma y log 2 of p of x comma y divided by probability of y. Clear? So it's possible to introduce the idea of mutual information, which is the amount of information shared by both variables, and therefore reduction of uncertainty about x provided by the knowledge of y. तो इसमें क्या है कि ये भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आइडिया हम लोग दे सकते हैं अगर नॉलेज ऑफ एक्स गिवन है, उसमें से हमें अनसर्टेनिटी मीन्स नॉलेज ऑफ वाई हमें निकालना है. तो इन दैट केस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन फार्मूला भी वी कैन यूज़ इफ़ इट इज़ ऑलरेडी गिवन. सो देयरफॉर इंफॉर्मेशन दैट इज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स सेमीकोलन वाई इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई. सो जो भी होगी प्रोबेबिलिटी एक्स की, उसमें से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे. क्लियर? सो इंट्यूटिवली व्हेन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट दे डोंट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन. मीन्स अगर दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए तो वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे. हावेवर इन मशीन लर्निंग टास्क देयर इज अ वेरी टाइट डिपेंडेंसी बिटवीन द ओरिजिनल फीचर एंड इट्स prediction. So we want to maximize the information shared by both distribution.
If the conditional entropy is small enough, the mutual information gets close to the marginal entropy, which measures the amount of information we want to learn. Clear? So what is the use of these elements of information? That is how the machine learning approach uses the data set, or it collects the data set from different data sources while considering the various different features from different data sources. बिकॉज ऐसे हो सकता है कि एक ही डेटा का फीचर एक डेटा सेट में अलग है और दूसरे डेटा सेट में अलग है, लेकिन while combining we have to identify that and how to combine that data sets that is given here. क्लियर? मीन्स अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे. अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ तो इन्फॉर्मेशन सेम है, देन ओनली वी कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन. दैट इज़ हाउ यूजिंग मशीन लर्निंग वी आर कैलकुलेटिंग by applying these various formulas. Clear? This is all about the elements of information theory.